हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। द टॉपिक नेम इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, so let's understand what is the basic definition of refraction of light. Friends, we have seen that whenever the light ray will travel from one medium to another, it will try to change its path. Why is it changing its path? Because as soon as the medium gets changed, the speed of the light will get changed. That's why the path of the light will also get changed. So because of this change in the path of the light with the change in the medium, the phenomena of refraction of light occurs. So by the definition, we say that whenever there is change in the path of light with change in medium, then we say that such phenomena is called refraction of light. Okay, now what is the cause behind the refraction of light? The cause behind the refraction of light is change in the speed of light when it travels from one medium to another. Okay, so whenever there is a change in the speed of light when it travels from one medium to another, then refraction of light will occur. So let's understand why the speed of light is getting changed. Okay, so in optical physics, that means in the physics portion where we study about light, there are two kinds of medium. One is rarer medium and another is denser medium. Like in mass, we have dense mass and rare mass. Similarly, we have for light where it has the rare medium or the denser medium. Like in mass, dense का मतलब क्या हुआ? Dense का मतलब हुआ something which is very closely packed. Okay, like dense forest, right? Dense forest में क्या होता है? घना जंगल जिसमें पेड़ बहुत ही पास पास होते हैं. Trees are aligned very close to each other. Such a kind of forest is dense forest, and where the trees are very far away, they are rare. Okay, so similarly, mass is also dense or रेयर. ओके, जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा, जिस मास में, उसमें वो मास आपका डेंस होगा. ओके, और जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे वो मास आपका क्या होगा? रेयर होगा. बट इन केस ऑफ लाइट में क्या होगा? ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे जहाँ दूर दूर होंगे वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, और जहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होंगे वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा. तो आप तो जानते ही हैं कि अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ और वो लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से चेंज होके ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा. तो लाइट विल definitely deviate from its original path. Similarly, vice versa. So let's see how it happens. We take 3 cases here. One is when the light ray travels from rare to dense medium. So let's take a boundary here, and let's say this is the rare medium and let's say this is the dense medium, and we draw a normal to this surface. Okay, this is the point of incidence. Okay, so now if we draw an incident ray which is making certain angle of I, that is angle of incidence with the normal, and this is your incident ray, then actually if the whole medium was rare, would have been rare, then this ray would have traveled like this. But since the medium is getting changed from this boundary, it will no more travel along this straight line. It will pass like this. Okay, such that the angle of refraction which it is making with the normal ray, this angle of refraction is smaller than the angle of incidence. So what will happen? Angle R will be lesser as compared to angle I in case of light ray which is traveling from rare to dense medium.
So angle R will be of lesser value as compared to angle I, and the ray will bend towards normal. Okay, and this vice versa will happen when the ray will travel from dense medium to rare. So if the ray travels from dense to rare, what will happen? See, this is your normal, this is your dense medium now, and this is your rare medium. And if the ray of light is going like this, it should have traveled along this path, but due to the change in the medium, now the ray of light will bend away from the normal and go it like this. Okay, so the angle of refraction is this one, which is greater as compared to the angle of incidence. So I will say that angle of refraction is having a larger value as compared to angle of incidence. And this time the ray bends away from normal. Okay, this will be your second case. But what will happen if the ray is traveling along the normal? Then let's see. If the ray travels along the normal, no matter what is the medium, whether it is traveling from rare to dense or from dense to rare, we will just see if the ray is traveling along the normal, then it will pass without any bending. Okay, it will pass straight way because the angle I and angle R both are equal to 0. Okay, so in such a case ray will pass undeflected. Ray passes undeflected. So this will be the three cases which you need to understand in order to draw the ray diagrams. So when it is passing from rare to dense, it is going towards the normal. When it is passing from dense to rare, it is going away from the normal. And when it is traveling along the normal, then it is going without any kind of deflection. Okay, so let's start with the laws of reflection of light. Okay, so the laws of reflection of light, let's say what it says. Sometimes in the examination it can ask take laws of refraction of light. So like in the case of reflection of light, here also we have got two laws. First is the incident ray, the reflected ray, sorry, not reflected, refracted, and normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, and the second one says that the ratio of sine of angle of incidence to that of sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. This is also known as Snell's law. Okay, the name of this law is Snell's law, the second one. Okay, तो फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बताया था कि जो इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल रे होगी और रिफ्रैक्टेड रे होगी, all the three rays will lie in the single plane. Okay, the second law is very important. Its name is Snell's law, and it says that whenever the ray of light is passing from first medium to second medium like this, suppose, okay, and there is an incident ray like this,
This law you have to understand it very carefully. This is your normal ray, this is your incident ray, this is your angle of incidence. Okay, and after refraction it will bend towards or away from the normal. Let's say it bends towards the normal. Let this be the angle of refraction, which is denoted by R. So in order to see the Snell's law in such a case, what you will do is you will just write the refractive index, which is written by symbol N. Now we will come to the definition of refractive index in the next topic, but you must understand that refractive index of any medium is the property of that medium which compares the speed of light with that of that medium with the another medium. Okay, so refractive index is denoted by the symbol of N. For a particular medium there is a particular refractive index. So if we talk about the first medium, then the first medium will have the refractive index of N1. Okay, this is your first refractive index, that is for medium 1. This should be multiplied by the sine of sine theta, cos theta and so on. We will multiply it by sine of the angle in that medium. That is in first medium, what is the angle? That is I. So I will write I here. Okay, and this product should remain constant, and similarly what will happen, I will write another medium, that is second medium refractive index N2, and multiply it by sine of angle of that medium, that is R. Okay, so I will take the product of two things. First is your refractive index of that medium, and it will be multiplied by the sine of angle in that medium, that is for first medium the angle is I. Similarly, refractive index of second medium and multiplying by the angle of the second medium, that is R, and both will be equal to constant, that is same. Okay, so in order to find the ratio of sine I divided by sine R, I will just take this N1 and put on the right side. Okay, so it will become N2 divided by N1. This ratio can also be written as N21, or it can also be written as N21. Okay, so this means that we are talking about the refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, refractive index of second medium with respect to first medium. This is your Snell's law. Okay, so now let's come to the topic of refractive index. Okay, so the question came in the year 2020 in CBSE board examination. Define absolute refractive index and express it mathematically. This question came in 2 marks. Okay, so let's understand the definition of absolute refractive index. Absolute refractive index or refractive index is symbolized by a symbol N, or you can use another symbol which most of the books have taken, that is mu. You can also write it as mu, but here you can take only one, either N or mu. Okay, so this is the symbol which we use for refractive index, and if we talk about the definition, it is the ratio of speed of light in vacuum to its speed in that medium. Okay, so this is the definition, and if we write it mathematically, I will write it like this: N is equal to C by V, where C is your speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to the power of 10 to the power of 8 meter per second. And since both of them are speed, C is known as speed of
light in vacuum, and v is known as speed of light in medium. Okay, and both of them are speed ratio, therefore the refractive index is not having any SI unit because it is also meter per second or it is also meter per second. So both of them will get cancelled. So since it is a ratio, since Ri is a ratio of two speeds, therefore it has no SI unit. कोई यूनिट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि दोनों सेम चीज का रेशियो, स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड. दैट्स व्हाई. So this is the basic definition of absolute refractive index. Whenever we are comparing the speed of light in a particular medium with respect to the speed of light in the vacuum, then such kind of refractive index is known as your absolute refractive index. And here we have taken the mathematical form. Either you can also you can put it in some box in order to highlight it. Okay, so this is the answer for 2 marks. Okay, so basically what do you mean by refractive index? Refractive index tells you about the comparison of speed of light in two different media. Okay, if instead of absolute refractive index you've been asked about the relative refractive index, then what should be the answer? The same thing will be there, but this time the ratio of two different mediums we are going to take. Okay, suppose there is first medium and there is second medium, so we will write it n2 divided by n1. So for this I will have to write C divided by V2 upon C divided by V1, which eventually comes out to be V1 by V2. CC will get cancelled. Okay, so if you want to take the absolute refractive index, then we have to compare it with the speed of light. This is absolute refractive index. This is absolute refractive index. But when we are comparing two other mediums, two different mediums, then such a kind of refractive index will tell you about the relative refractive index. Okay, and we can easily see in case of relative refractive index, since it is the inverse relation of the speed of light in the medium, so the ratio will reverse here in the case of speed of light. Okay, so now we come to the fact with what are the things which affect the refractive index. Factors affecting refracting index. So there are 4 factors which affect the refractive index. First is your nature of the medium, whether your medium is rare or dense. Okay, nature of that medium. If the medium is optically dense medium, then the refractive index will be larger value, and if the medium is optically rare, then the medium refractive index will have smaller value. Okay, like for example, refractive index of air, it is equal to 1.0003. refractive index of water, it is equal to 1.33. refractive index of glass, it is around 1.42 or 47, or we can say 1.5 nearly. Refractive index of diamond, it is nearly 2.42. So out of all this, air has lowest refractive index, so it is rare, and diamond is having the highest refractive index, so it is denser medium. Okay, so this is the basis on which the refractive index will tell you that whether the medium is optically rarer or optically denser. Okay, the second factor which affects the refractive index is your nature of the surrounding medium. Nature of surrounding medium. The third one is wavelength of light. Wavelength of light. How do we denote?
How do we understand this fact that it is depending on wavelength of light? I told you that n is equal to c divided by v. That is, this is the speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. Okay, so if we use the relation that speed is equal to wavelength multiplied by frequency, then we can say that speed of light in vacuum can be written as wavelength, that is lambda, in air multiplied by frequency of light. And similarly, speed of light in medium can be written wavelength of light in medium multiplied by frequency. Now frequency doesn't get changed. Frequency is the property of the source of light. That's why it doesn't get changed, okay, for any medium. But wavelength will get changed according to the different medium. So from here frequency will get cancelled. So we come to know that wavelength, that refractive index will be inversely proportional to the wavelength of the medium. That means if we talk about violet light, okay, violet light is having the lesser wavelength, therefore for a medium its refractive index will be larger, and red color light, it is having a larger wavelength, so for a particular medium its refractive index will be lesser. Okay, so this is how we relate with the wavelength of light. And lastly, the fourth factor which affects the refractive index is temperature. Okay, temperature. So these are the four factors which affect the refractive index of light. So here we have finished about the refractive index. Now we come to some of the topics that are related to refractive index. Let's do some questions. Question number 1. Light enters from air to glass having refractive index, that is Ri, 1.50. What is the speed of light in glass? This is your first question. Okay, so how to attempt this question? Such kind of questions come in the board examinations a lot, so please do attempt these questions. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. That means it is entering from where to where? Air to glass. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, एयर का आपको पता है 1 होता है हमेशा. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? सो यू विल फर्स्टली राइट डाउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is equal to refractive index of glass with the divided by refractive index of air. ठीक है? So you will write it that it will be you'll simply write it like this, that you can simply write it like this: refractive index of glass is equal to C by V. So if you know the refractive index of glass, this is 1.5, then you know the value of 3 into 10 to the power of 8, that is C value, and you need to find the speed of light V. Then you will simply say V is equal to what? We'll go here, 3 into 10 to the power of 8 divided by 1.5. This decimal will go up, so it will divide by 2. So V is equal to 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So this will be the speed of light in the glass. Okay, so such kind of question can come. This was very easy. Now let's come to the next question. So second question is, the Ri of water, that is refractive index of water, is 4 by 3, and for glass is 3 by 2 with respect to air. What is the Ri of glass with respect to air?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ये पहला वाला तो इजी था, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3 with respect to air. Any refractive index of water with respect to air. This is absolute refractive index of water, which is equal to 4/3. And similarly, refractive index of glass with respect to air, it is given to as 3/2. Now, what is the refractive index of water with respect to air? That means you need to find refractive index of water. Sorry, refractive index of glass with respect to water, not air. Refractive index of glass with respect to water. This you have to find. Okay. So now let's understand how to do it. Go with this. So refractive index of glass with respect to water means refractive index of glass divided by refractive index of water, which is equal to, eventually either we can write absolute refractive index or we can write simply Ng upon Nw. It means the same thing like this. Okay. So Ng की वैल्यू कितनी दी है 3/2 और Nw की वैल्यू कितनी दी है 4/3. तो ये हो गया 3/2 into 3/4. That means 9/8. So 9/8. If you do the calculation and do it in decimal form, you will come to know about the refractive index of glass with respect to water. That will be 1.1 something. Okay. So this will be the refractive index of glass with respect to water. Okay. So this is your answer. Okay, so let's move on to another question. Question number 3. In which medium light travels fastest? किस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल चलेगी, सबसे ज़्यादा तेज चलेगी? ओके. तो वाटर और ग्लास किस वाले में? ठीक है. तो आपको देखना है, आपको याद होना चाहिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33. ओके. एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5. तो सिंस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, तो स्पीड of light in glass is lesser as compared to speed of light in water. तो आप बता सकते हैं कि light travels faster in water. Light travels faster in water. ये रीजन आपको समझ में आया होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी. ठीक है. तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें स्पीड कम होगी. So this was your third question. Now we come to the fourth question. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this? इस लाइन का मतलब क्या हुआ ये आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में. हाँ, क्वेश्चन एक बार पहले आता था, आई थिंक 2016 समथिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है. सो पे अटेंशन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एज 2.42. अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है. तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है C/V. ठीक है. यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया C/N. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट in diamond, velocity of light in diamond is 1/2.42 है ना, into C. यानी C का 2.42 कम हो गया है ना वैल्यू, यानी 3 × 10⁸ से 2.42 वैल्यू कम हो गई. in diamond is 1/2.42 times lesser than
velocity of light in vacuum. ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा, स्टेटमेंट होगा। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। तो v जो आया यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वो आपका निकल के आता है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या समझ में आया कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसमें स्पीड उतने ही टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Okay, let's see this question. Question number 5. The figure shows a ray of light as it travels from A to B. The refractive index of B with respect to A is, आपको बताना है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं। लेट्स से दिस एंगल इज 45 डिग्री, ओके, एंड द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस, एंड देन देयर इज अनदर रे ऑफ लाइट such that this angle is your 30 degree. This medium is A and this medium is B. Okay, sorry, this medium is B and this medium is A. Light is entering from B to A. So this figure shows a ray of light as it travels from A to B. So arrow will be like this, A to B. Okay. So for this, the refractive index of medium B with respect to A, B का refractive index with respect to A, तो आप कैसे लिखेंगे, B का refractive index with respect to A, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, refractive index of B ऊपर रहेगा, refractive index of A नीचे रहेगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो अब समझते हैं इसमें कैसे करेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। ठीक है, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या कहते हैं, जो भी मीडियम हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ दैट एंगल। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा ए का मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन ए। अब एंगल इन ए आपको ध्यान देना है, ये जो एंगल है ये नॉर्मल से नहीं बन रहा, आपको कौन सा एंगल लेना है जो नॉर्मल से बन रहा हो। तो ये ध्यान रखिए, ये मिस्टेक सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं लोग। हमें हमेशा एंगल कौन सा लेना है जो कि नॉर्मल से बनाना है। तो ये हमें 30 दिया है, टोटल 90 होता है, तो 90 में से 30 गया तो ये एंगल कितना बच गया, 60 बच गया, तो हमने ये 60 दिया। और यही एंगल आपको यहाँ स्नेल्स लॉ में पुट करना है, तो साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कम्स टू दिस सेकेंड मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम multiplied by sine of angle in that medium is 45 degree. So I will write 45 degree here. Okay, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ नॉर्मल से ही बनाना है। ठीक है, तो ये है, तो आपको निकालना क्या है, NB अपॉन NA। NB यहाँ है, ये NA को इधर भेज दीजिए, साइन 45 को इधर भेज दीजिए। तो साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई NA। यही आपको निकालना है जो कि आपको दे देगा NBA। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √2। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये ऊपर में एक √2 था, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए √3/2। दिस इज योर आंसर फॉर 5th क्वेश्चन। ओके, next we do the other question. Okay, so let's do another question. This will be your question number 6. A light ray
enters from A to B, the refractive index of A with respect to B is, थ्री ऑप्शंस हैं आपके पास, लेस देन यूनिटी, बी ऑप्शन मोर देन यूनिटी, सी ऑप्शन इक्वल टू यूनिटी, and D option none. Okay, so what, these are the option based question. So let's do this. A light ray enters from A to B. ठीक है, A से B में एंटर कर रही है लाइट रे. ये आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर. ये B मीडियम है, ये A मीडियम है, ये नॉर्मल है और लाइट रे इस तरीके से जा रही है. ठीक है, ऐसे जा रही है A से B में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बताना है आपको. तो आपको पता है कि अगर लाइट रे ए से जा रही है तो इसको जाना कैसे था, स्ट्रेट लाइन जाना था ना, ऐसे जाना था, स्ट्रेट जाना था, पर ये बेंड हो गई. किधर बेंड हो गई, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल के तरफ बेंड. तो रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. और ये कब होता है, ये कब होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. ये बता चुकी हूँ मैं, अगर आपको याद नहीं है तो पहले वीडियो में पॉज करके पीछे चले जाइए और देख लीजिए कि जब भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल in this case, in the B case, B medium. Okay, so NB is greater than NA. So if we divide both the sides by 1, then you will get both the sides by NB. Let's do that. दोनों तरफ NB से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 which is greater than NA upon NB, which is the refractive index of A with respect to B. This is equal to what? This can be written as refractive index of A with respect to B. So refractive index of A with respect to B is less than unity. So what will be the answer? First option, less than unity. Okay. So this is your sixth question. Now we move on to the some of the questions which came in the CBSE board examinations. Okay. So here is the first question which came in the 2021 examination. The Ri of medium x with respect to y is 2 by 3 and Ri of medium y with respect to z is 4 by 3. Find the Ri of medium z with respect to x. If the speed of light in medium x is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, calculate the speed of light in y. This question came in 3 marks. So let's do this question. You have to first read the question. कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई हैं आप पहले उसको लिखिए. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू y दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 2/3. यानी आपको दिया हुआ है nx/ny. nx/ny ये दिया हुआ है 2/3. ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट मीन्स ny डिवाइडेड बाई nz दिया हुआ है 4/3. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू x. z विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको nz डिवाइडेड बाई nx निकालना है. ये निकालना है. If the speed of light in medium x is given to you as 3 into 10 to the power of 8 meter per second. तो आप समझ लीजिए
जब आपको ये निकालना है nz/nx, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, nz हम क्या करें, ऊपर नीचे दोनों तरफ y से ny से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें, तो nz/ny डिवाइडेड बाई nx/ny, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं nz/ny मल्टीप्लाइड बाई ny/nx। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज है उसको पुट कर दिया जाए। यहाँ पे ny/nz है, ny/nz की वैल्यू है 4/3, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे है nx/ny जिसको आपको 2/3 लिखा है, तो यहाँ पर ny/nx को क्या लिखेंगे, 3/2, उल्टा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 3/2, तो आंसर क्या हुआ nzx का, ये हो गया 9/8, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू x मीडियम इज 9/8। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन y मीडियम में निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको भी निकाल लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, यहाँ तक करने के आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन y, तो हमें दिया हुआ है nxy यानी nx डिवाइडेड बाई ny, हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं vy/vx। क्यों, क्योंकि आपका जो nx है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ v कहाँ लिखा रहेगा, नीचे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है इसलिए। तो इसका मतलब आपका क्या रेशियो आ गया, vy/vx का रेशियो आ गया कितना, 2/3, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x दिया हुआ है, तो vy इज इक्वल टू 2/3 इंटू vx, और ये वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी है, 3 इंटू 10⁸, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन y मीडियम कितना आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y निकाल लिया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2021। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था CBSE 2024 एग्जामिनेशन में। So let's read that question. In CBSE 2024 question, it was written that absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 if the speed of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, the speed of light in water is A option 9/4 into 10⁸ meter per second, B option 5/2 into 10⁸ meter per second, C option 7/3 into 10⁸ meter per second, and D option 16/9 into 10⁸ meter per second। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास और वाटर का, विच इज 3/2 एंड 4/3, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है कितना, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 4/3, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है VW, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो अभी मैंने समझाया N और V दोनों ऑपोजिट होते हैं रिलेशन में, तो Ng/Nw विल बी इक्वल टू VW/Vg। इसको रख दीजिए वैल्यू को, 3/2 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू VW/Vg की वैल्यू है 2 into 10⁸, निकाल लीजिए, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9/8
इज इक्वल टू VW/2 इंटू 10⁸ 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज ए ऑप्शन। So this question was asked in 2024 CBSE board examination. Okay, so let's do another question now. Okay, अब जो है क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं जो वो 2022 में बहुत 2020 में बहुत पूछा गया था। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं हम थोड़ा सा। Okay, so in the year 2022 this question came, the RI of medium A is 1.5 and medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10⁸8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B? ठीक है, आपसे बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए दिया हुआ है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी दिया हुआ है 1.33। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है सी की वैल्यू 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए एंड बी? यानी आपको वी ए निकालना है और वी बी निकालना है। ठीक है, तो आप तो आसानी से इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा C/VA। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा VA की वैल्यू C/NA। C की वैल्यू है 3 into 10⁸8 और NA की वैल्यू है 1.5, तो VA निकल आएगा 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत आसानी से निकल आया। नेक्स्ट ऐसे ही निकाल लीजिए VB इज इक्वल टू C/NB। ये हो जाएगा 3 into 10⁸8 और NB की वैल्यू आ गई 1.33। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्चुअली 4/3 लिखा हुआ है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा 9/4 हो जाएगा, या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। या तो आप 9/4 लिख लीजिए या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए 2.25 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। So this will be the answer for this question. Okay, so आपसे A की वैल्यू पूछा था और B की वैल्यू पूछा था, दोनों आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी 2022 में पूछा गया था। 2022 में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चीज के ऊपर, तो लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको। ओके, ये 3 मीडियम्स हैं, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम। इसमें 2 नॉर्मल्स बनाए गए हैं। पहला नॉर्मल ये है, ये इंसिडेंट रे हो गई, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये एंगल बना रहा है θ1। ओके, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल बना रहा है θ2। ओके, एंड देन फिर एक और हम नॉर्मल बना रहे हैं यहाँ पे, ये अगेन इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो दिस एंगल इज अगेन θ3। सो इट इज आस्किंग दैट इफ दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द 3 मीडियम्स, देन व्हाट इज ट्रू? देयर आर 4 ऑप्शंस। 4 options have been given to you. N1 is equal to N2, B part N1 is greater than N2, C part N2 is greater than N3,
and D part N3 is greater than N1. Okay. So let's see, observe this diagram. You can see that when it is going from 1 to second medium, then it is bending towards normal. Further it is going from second to third medium, it is again bending towards the normal. So you must see that if the rays are bending, then that medium should be denser medium. That medium's refractive index should be more as compared to earlier one. So N2 का refractive index N1 से बड़ा होगा, N3 का refractive index N2 से बड़ा होगा. ठीक है. So we can say, कंक्लूड कर सकते हैं N3 का बड़ा होगा, N2 का छोटा होगा, N1 का उससे भी छोटा होगा. तो इनमें से जो भी ऑप्शन उसमें से लग रहा है आपको कर लीजिए. बराबर तो है ही नहीं. N1 इज ग्रेटर देन N2, नो, बेंडिंग हो रही है. N2 इज ग्रेटर देन N3, नो, बेंडिंग हो रही है. ठीक है. N3 इज ग्रेटर देन N1, यस, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द ईयर 2022. ठीक है. सो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे 22 में, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अभी के लिए ये जो टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं. होपफुली आपको समझ में आया होगा. जितने भी क्वेश्चंस हमने टेकअप किए हैं, या तो ये एनसीईआरटी से बेस्ड हैं या फिर ये सीबीएसई एग्जामिनेशन से लिए गए क्वेश्चंस हैं. तो आई होप आपके प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. टिल देन, बाय बाय.